So you should write about what is Bhopal, where is Bhopal is located. Okay, what are the geographical features regarding Bhopal? So you should know the exact location of the places and what are the geographical economic importance that required to write within a 30 to 40 words. So that's why knowing each and every place of India is very important, whether it is related with your means important mineral resources, or whether it is related with the important industries, whether it is related with the important seaports, or whatever the location is famous for. That will be a means very important to know exact location of a particular place. So we will have one classes each and every week that related with the map is, or we can say that both Indian map and world map. Second important thing is a discussion of previous year question papers. I will give you some sample. Okay, how we will able to cover all the previous year questions as per the completion of the topic. जैसे कि हम लोग कोई भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके कंप्लीट होने के बाद किस तरह से उस क्वेश्चंस पे क्या क्या क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं, वी विल ट्राई टू सॉल्व इन क्लासरूम. ठीक है. एंड वी विल आल्सो हैव अ सेपरेट टेस्ट सीरीज for your optional subject. This test is for those who want to join only for test series, और उनके लिए जो कि ऑलरेडी इनरोल्ड हैं क्लासेस में, ऑप्शनल क्लासेस में, तो उनके क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी चलता रहेगा. ठीक है. सॉफ्ट कॉपी नोट्स विल बी अपलोडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. See, in classroom we will have I will give you notes, I will dictate you important points, but at the same time I will also give you PDF. Okay, what are the means some of the topics which we will not able to cover in classroom, some of the extra materials that required. Also speak in Hindi. Okay, so we will have a session in bilingual. We will I will speak in both English and Hindi. ठीक है. तो हिंदी में भी बात करेंगे कि क्लासरूम का जो होगा उसमें हम लोग नोट्स को लिखेंगे भी, और साथ में पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा. ठीक है. तो वैसे में क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स जो है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से मिलेंगे अलॉन्ग विथ योर डायग्राम्स. ओके. सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, स्टूडेंट कैन पुट देयर डाउट्स इन चैट बॉक्स गिवन इनटू देयर अकाउंट विथ ईच सेशन. So we will have a session every day. Okay, or one day alternate we have a session. So in that session, if I am teaching you something on a topic, if you have any doubt you can ask me, or you can ask me a question. Okay, not only in classroom. Suppose आप घर पे जाकर घर पे फिर से बाद में जब वो नोट्स को पढ़ रहे हैं, अगर उसमें भी कभी प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या फोन करके आप मुझसे बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो ये हमारे क्लास के प्रोग्राम है, क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 we are not started offline classes. This is online class program, so this will be entirely based on online. Okay, now we'll start to see what are the important positive and negative side for choosing a geography optional. ये सबके मन में होता है कि बहुत कोई आप लोग चाहते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेने के लिए, कोई को बोले कि नहीं लेना चाहिए, ज्योग्राफी बोरिंग नहीं है और उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. तो उसी के बारे में हम लोग मिसकंसेप्शन जो बहुत लोगों के अंदर में है उसको हम लोग आज क्लियर करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव साइड. व्हाट आर द पॉजिटिव साइड ऑफ चूजिंग ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू विल सी द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल. ठीक है. सिलेबस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, whether I am talking about GS subject or in optional subject. You must see first syllabus, or you can download syllabus and take print out. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना चाहिए. So when you will see the geography optional syllabus, that syllabus is very definite syllabus, very well defined syllabus. Most of the topic you will study in GS subject also, in GS part. In GS part of geography means you will study about the climatology, geomorphology, oceanography. At the same time, little bit more in detail you will study in optional subject, but basic part you will cover in your GS subject. तो आप जब ज्योग्राफी ऑप्शनल का जब सिलेबस देखोगे तो आपको लगेगा कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो कोर पार्ट हो जाता है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, वो जो कि आपको जीएस में नहीं पढ़ना है. ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सी एंटायर सिलेबस, you will see is you will able to cover in GS part also. Yes, I will provide syllabus also. First of all, let's discuss about the positive negative side. Second है कि scientific subject easy to understand. So this is very important point regarding geography optional, that this is a scientific subject. Whatever you will study in your optional subject, you will see outside a phenomena happening outside. For example, when you study about the cyclone, you study about the features of cyclone. You will study about at what time in India cyclone or may Bay of Bengal or Arabian Sea.
you will see also in newspaper in the time of अक्टूबर नवंबर मंथ में जब देखोगे तो साइक्लोन का ओरिजिन कैसे हो रहा, तो वो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड है। प्रीलिम्स एंड मेंस में आपको काफी इससे हेल्प होता है। प्रीलिम्स में यू नो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन you can say 15 to 16, 15 to 18 question will be from your geography और भी that is based on current affair। तो ऑब्वियसली अगर आपका ऑप्शनल है तो आपका अच्छा कमांड होगा ज्योग्राफी में और आप काफी अच्छे से क्वेश्चंस को सही तरह से सॉल्व कर पाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज ओवरलैप विथ योर जीएस पेपर 1। व्हेन यू विल सी द जीएस पेपर 1 सिलेबस इन मेंस एग्जाम, a part of out of 250 marks, 60 to 80 marks question that will be come from geography, means part of geography that include your geophysical phenomena, second feature of world physical geography, climatology, oceanography और जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट यू कैन इजीली राइट आंसर इन अ मोर वे एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट, सो देयर इज अ चांसेस टू गेट अ गुड मार्क्स इन जीएस पार्ट आल्सो अपार्ट फ्रॉम योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। इंपॉर्टेंट बात होता है कि ऑप्शन के जब भी हम लेते हैं तो इस बातों को ध्यान रखते हैं कि वेदर अ मटेरियल इज अवेलेबल ऑनलाइन और ऑफलाइन और नॉट। कितना प्रॉब्लम कभी कभी होता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, सपोज यू वांट टू चूज अ केमिकल इंजीनियरिंग एज अ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल आप उसको तैयार नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है कि मटेरियल्स का मिलना। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आपको ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के कोई भी फैकल्टीज का अगर मटेरियल है तो इजिली अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। इफ यू विल राइट अ गुड आंसर to the point, you will draw a diagram, okay, as per if you will understand the question, obviously you will get a good marks। कुछ इसके नेगेटिव साइड्स भी हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, ठीक है। तो कहा जाता है कि ह्यूज सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। ऑफ कोर्स ये बात सच है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस ही बहुत बड़ा होता है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, लेकिन इसमें आप देखोगे जब सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी आगे के कुछ स्लाइड्स में, तो यू विल फाइंड दैट पेपर 2 इंटायर इंडियन ज्योग्राफी, आप इंडियन ज्योग्राफी का 80% पार्ट कहीं ना कहीं आप जीएस में जरूर पढ़ोगे, ठीक है। वो आपको सिलेबस देखने में बड़ा लगेगा लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं अच्छी तरह से जीएस में भी पढ़ना है तो आप उसको कवर कर पाओगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ह्यूज कंपटीशन। ऑफ कोर्स अगर 15,000 कैंडिडेट अगर मेंस दे रहे हैं तो उसमें से 3,000 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि मेंस दे रहे हैं एज अ ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर, तो उसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होता है, ये बात सच है। लेकिन अगर आप सब सब्जेक्ट को समझ रहे ढंग से, अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आस्क्ड इन मेंस, मतलब बहुत से बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है या दे आर नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंट थिंग। इफ यू विल कवर द सिलेबस ईच एंड एवरी टॉपिक as per given in your syllabus, not a single question you will leave in your exam, okay। Okay, so question is repeated, I will show you some questions past year question paper कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और हाउ यू विल टेक हेल्प फ्रॉम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर द। तो ये डिकोडिंग ज्योग्राफी बात करते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल कितने मार्क्स के होते हैं, टोटल नंबर 500 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आप देखो पेपर 1 जो है, पेपर 1 है, पेपर 1 जो है वो 250 मार्क्स का होता है, दैट इंक्लूड in two parts. First one is called principle of geography or physical geography, and second one is called human geography. So this paper 1 will be a 250 marks and paper 2 will be a 250 marks, that entirely a Indian geography। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको ऑप्शनल पेपर एक ही होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट एक है, लेकिन वो पेपर दो होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। बोथ पेपर विल हैव 250 मार्क्स, टोटल मार्क्स विल बिकम 500 में। और ये भी बात आप जान लो कि इसी दिन सेम डे आपको दोनों पेपर का एग्जाम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पेपर 1 आप आज दिए कल जाकर पेपर 2, सेम डे आपको सेम थोड़ा गैप होगा एग्जाम के बीच में, आप मॉर्निंग और डे टाइम में आप पेपर 2 का एग्जाम देंगे, ठीक है। नाउ सी द सिलेबस इन डिटेल, व्हाट यू विल स्टडी इन ज्योग्राफी ऑप्शनल पार्ट ए, that is the part include your physical geography। So physical geography include following topics like climatology, obviously most of the part climatology study in GS, but also geomorphology, then oceanography, biogeography and environmental geography। This 5 part will become a part of A, that is GS your optional paper 1 फिजिकल ज्योग्राफी। अभी हम लोग इसके डिटेल सिलेबस भी देखेंगे कि क्लाइमेटोलॉजी में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। लेकिन जो फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी इज बेसिकली डिवाइडेड इन 2 पार्ट, ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। सो फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड योर क्लाइमेटोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट
geography. Okay, so climatology, basically you have to study about climate, weather, scientific process, okay, like cloud formation, thunderstorms, cloud precipitation, rainfall. Okay, phenomena atmosphere is related that you will study in climatology. Okay, geomorphology, that is a process that result in the formation of different types of landforms on the surface of the earth. So that is about the reason behind the formation of plateau, volcanoes, okay, earthquake, mountain building process, that will be part of geomorphology. Now you see the syllabus here in detail, that this is the part B of paper 1, that include your human geography. So human geography include your perspective human geography, okay, economic geography, population settlement geography, regional planning, model theories, law in ह्यूमन ज्योग्राफी. तो ये पेपर 2 होता है. सी ऑडियो नॉट क्लियर. कौन सा ऑप्शनल पेपर सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करता है? सी ये अनिल, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे कौन सा ऑप्शनल पेपर सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करता है, ये कभी कांस्टेंट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है कि यही सब्जेक्ट में हमेशा मार्क्स ज्यादा आता रहेगा. हर साल आप देखोगे यूपीएससी में कभी भी कभी ज्योग्राफी में अच्छा number of candidates, more number of candidates qualified in UPSC exam, and from sociology, from public administration. तो ये चेंज होते रहता है. आपको बस इस बात का ध्यान रखना कि आप जो भी सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो, आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है. आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट को, अगर मान लीजिए मैं बोलूंगा कि मैथमेटिक्स इज ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट स्कोर वेरी गुड मार्क्स, और ये बात सच है, दोज कैंडिडेट हु टेक मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट दे स्कोर 400 मार्क्स, 350 प्लस मार्क्स इन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो काफी स्कोरिंग होता है. लेकिन अगर आप आपका बैकग्राउंड अगर कॉमर्स है, अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट से पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए मैथमेटिक्स ऑप्शनल एक सब्जेक्ट बहुत चैलेंजिंग पार्ट हो जाएगा. लेकिन वही चीज है कि आप वही सब्जेक्ट को चूज करो जो इसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ काफी you know the process of exam, it will take itself take a more than 2 years for the completion of entire process of exam. तो आपको कहीं ना कहीं 2.5 से 3 साल ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ रहना है, तो वो आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है. प्लस स्टडी मटेरियल्स आपको भी पता होना चाहिए, स्टडी मटेरियल्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. तो ये सब सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करोगे. अभी मैंने कुछ दिन पहले एक सेशन लिया था जिसमें हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट. अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को, तो कैरल लॉन्चर यूपीएससी यूट्यूब चैनल है, उस पर विजिट करें और उस वीडियो को देखिए. उसमें मैंने बताया है कि देयर आर सम आइडिया हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट. ओके, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस पर जरूर आप देखें. अगर डिटेल सिलेबस के बारे में बात करते हैं पेपर 1 प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी में, तो सबसे पहले बात आती है जियोमॉर्फोलॉजी की. ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी है, इसमें मोस्टली टॉपिक यू विल स्टडी in your GS part also, like this is की factors controlling landform development. ये आपको ऑप्शन में थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आप जीएस में भी पढ़ोगे. ठीक है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट के बारे में, फंडामेंटल जियोमैग्नेटिक्स, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट. फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर, जिसमें सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ोगे. क्लास 11 का जो एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें द चैप्टर इज गिवन इन डिटेल अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ओके, अर्थ इंटीरियर में क्या क्या डायरेक्ट सोर्स है, व्हाट आर इनडायरेक्ट सोर्स, टू नो व्हाट आर द केमिकल कंपोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन डेप्थ. तो आप कहीं ना कहीं जीएस में पढ़ोगे. ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक आप देखोगे क्या क्या इसमें पढ़ना, इरोजनल सरफेस, सुनामी, जियोमॉर्फिक साइकिल्स, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो काफी ऑप्शनल के कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, और उसके लिए आपको एक डिटेल स्टडी और अच्छा से पढ़ना पड़ेगा. जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया. ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में देखिए टॉपिक्स, मोस्ट टॉपिक विल कवर इन जीएस पार्ट आल्सो, लाइक कोपेंस, थॉर्नवेट एंड ट्रेवर्दा. दिस आर द सम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी that is very different from GS subject, you will study in your optional paper. okay, तो ये क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, आप इस तरह का सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हो. कहाँ से? तो यूपीएससी के वेबसाइट से, या और भी कहीं कैरियर लॉन्चर के साइट पर भी जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. So I will not take too much time to discuss each and every topic in your syllabus. I will suggest you first you download the syllabus and take printout, and then underline each and every topic. If you know the topic, suppose you know the topic genesis of soil, so underline it. If you don't know the topic, what is the factor influencing world distribution of plant animal, underline it also by a different color. Means this is new this is new for you, this topic is new for you, and so it is required a lot of means materials. You have to collect materials to know the what are the important points. So
आपको क्या करना है कि जब भी आप सिलेबस डाउनलोड करो तो उसको अंडरलाइन करो ईच एंड एवरी टॉपिक को, ठीक है, ईच एंड एवरी टॉपिक को अंडरलाइन करना है 2 डिफरेंट कलर से, एक कलर जो ग्रीन यूज करो वेयर you know the topic very well. Okay, if you know the topic very well, then underline by a green color. And if you don't know the topic, this is a new first time you are seeing the name of the topic, then underline by a red color. So this will make you distinguish between how much you know about the syllabus and what are the new things you will going to study in a particular subject. So that will be give you an idea कि आपको कितना मेहनत उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में करना है, ठीक है. इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, देन okay, how to define current answer in geography optional, I will explain you. जैसे कि इसी टॉपिक पे, करंट टॉपिक पे देखते हैं, सॉइल्स के बारे में दिया हुआ है. अभी आप देखो कि सॉइल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काफी बड़ा एक रिपोर्ट आया था कि इंडिया का जो सॉइल बायोडाइवर्सिटी है, हाउ इट डिक्लाइनिंग. सो मे बी अ क्वेश्चन दैट विल बी कम इन योर मेंस एग्जाम related with the current affair. Soil biodiversity is the part of current affair, and you have to understand what is soil, genesis of soil, what are the factors responsible for the formation of soil, soil erosion क्या होता है, soil biodiversity, why soil biodiversity important, how our agriculture production is depend on good quality of soil. So that will be the part of your current affair, and you can link with your static portion. Even in environmental geography, you will see a report that always published in Down to Earth or Geography and You or United Nations Environment Program always published a report related with the biodiversity loss, related with the report with the species diversity, ecosystem diversity कितना harmful हो रहा है because of human activity, how our environmental degradation is happening all over the world, like desertification, okay, how means landslides happen in a mountainous area because of construction activity. So you can apply a current affair in your this part of your syllabus. Okay, so पहले तो आपको ये समझना होगा कि how you will able to find the current affair that is relevant for your optional subject. Okay, अब पेपर 1 का जो पार्ट बी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, अब इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि लास्ट 4 to 5 years का जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो कैंडिडेट हु आर स्कोरिंग वेरी गुड इन ऑप्शनल सब्जेक्ट, they are very strong in this part, human geography part. Human geography part was most neglected part of this subject by most of the candidate को ये पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं, हम हर चीज को रट्टा मारना है, हर चीज को याद करना है, ठीक है. इसके लिए मटेरियल्स को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसके लिए बुक कौन सा पढ़ें. हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए यू नो सविंदर सिंह इज फेमस बुक, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ information related to different types of sources which you are able to cover all the syllabus. So human geography अगर आप इस पार्ट पे फोकस करते हो तो obviously you will be score a good marks in paper 1. पेपर 1 में अगर आपको 150 और 160 प्लस मार्क्स लाना है, अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको अच्छे स्कोर करना है, तो इस पार्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं है. आपको अगर 2 to 3 मंथ अगर आप इसमें देते हैं, अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अगर याद भी करते हैं, नेम ऑफ दी जोग्राफर्स का नाम करके आप इफ यू विल प्रिपेयर, देन ऑब्वियसली विल स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर पेपर 1. So this is the most neglected part of many of the candidate. So don't neglect the part of human geography. You should complete it. How to conceptually clarified on human geography. NCERT में जितना has not seemed that great. Yes sir, first of all I will give you a strategy how you should cover your optional subject. Okay, तो पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. सिलेबस सारा डिटेल में है, सिलेबस आपको मिल जाएगा, सिलेबस के लिए सोचना नहीं है. You can download syllabus from different websites. Now let's come on book sources. What are the important book sources for your optional subject? See, first of all, part A, that is the paper 1 part है फिजिकल ज्योग्राफी. तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपको जितने भी टॉपिक सेलेक्ट, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इसके लिए आपको बुक खरीदना है सविंदर सिंह की बुक. एक सविंदर सिंह की बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि पूरे कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, जिसमें सारे टॉपिक्स दिए हैं. वो बुक आपको लेना नहीं है, आपको लेना है सेपरेट बुक. लेट मी शो यू वन बुक का नाम. देखिए, जैसे ये जियोमॉर्फोलॉजी की बुक है, सविंदर सिंह की बुक है, जियोमॉर्फोलॉजी पूरी है. ये बुक आपको जियोमॉर्फोलॉजी का लेना है. ये सेपरेट बुक है, ये पूरे कॉम्प्रिहेंसिव बुक नहीं है, सेपरेट बुक है. इसमें आपको पूरे जितने भी आपको जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस दिया हुआ, पूरे काफी डिटेल से दिया हुआ है.
So you should buy a separate book of geomorphology by Savinder Singh. Similarly, you can buy a climatology, oceanography and environmental geography also. ओके सो आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक है मार्केट में उसको परचेज नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं. ओके तो आप एक बार फिर से ये देख लो बुक. ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और भी अगर आप कहीं बाहर में दिल्ली में है तो यू कैन बाय फ्रॉम एनी बुक शॉप. If you have any doubt, you can ask me a question. What about biogeography? So that will be the part of your environmental geography. सविंदर सिंह के में ही आपको बायोजियोग्राफी वो पार्ट कवर हो जाएंगे. ठीक है. Now for ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आपको दो बुक सजेस्ट करेंगे. एक है ज्योग्राफिकल थॉट्स, आरडी दीक्षित और सुदीप्ता अधिकारी. ये दो बुक है. So you can buy, first you can buy a book R.D. Dixit. No need to buy two books together. First you buy a first R.D. Dixit. Then when you will have a concept of areal differentiation क्या होता है, quantitative revolution क्या होता है, you know a difference between environmentalism, ओके डिटर्मिनिज्म में क्या है. तो उसके बाद आप सुदीप्ता अधिकारी की बुक, जब आपको एग्जाम देना होगा जिस साल में, उस साल आप खरीद सकते हो. लेकिन बेस के लिए आपको आर.डी. दीक्षित की बुक, और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन, एंड मॉडल्स इन ज्योग्राफी के लिए भी माजिद हुसैन की बुक आप परचेज करो. दिस इज द बेस्ट बुक. ओके नो नीड टू बाय एनी एक्स्ट्रा बुक. इफ यू विल बाय दिस मच बुक इज सफिशिएंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर यूपीएससी मेंस एग्जाम. ओके नाउ what about the Indian geography? So Indian geography, you will buy a book. There are two books available in the market. One is R.D. Khuller and second one is your Majid Hussain. So I will suggest you to buy R.D. Khuller book. Okay, R.D. Khuller book को आप परचेज करो. ठीक है. That is sufficient for your entire exam for paper 2. And when you will see the syllabus of paper 2 that include entire current affair apart from physiography of India, climate of India, agriculture. Even in agriculture, question will be come from the current affair, like cropping pattern of India, biogeographical zone of India, क्या क्या सारे important agriculture part में, that will be the part of your Indian geography. So obviously you should buy R.D. Khuller. Yes, D.R. Khuller, R.D. Khuller. Yes. So you can buy this book. Majid Hussain की book है, तो any one book you can buy, but I will recommend you to read R.D. Khuller. Now एक और बुक आती है Made Simple Easy Part 1 and Part 2 by रूपा Publication. ये बुक बहुत important है, because most of the questions that will become in exam, that required a proper understanding of the concept. You can develop such a concept after reading this Rupa Publication book Part 1 and Part 2. Okay. Now apart from this, you have to study some magazines. Okay. Yes. I will show you. But okay, let me show you a book. But at present there is no light in my house, so everywhere darkness. Atlas. So what you will buy for Atlas? There are two Atlas: Orient Black Swan Atlas and Oxford School Atlas. So you can buy any one Atlas, or you can buy two Atlas, both the Atlas. Okay, no problem. For Atlas, if you have a combination of collection of good 2-3 Atlas, that will be a good for preparing for entire optional subject. For मैगजीन आप परचेस करना चाहिए, तो आपको जैसे कि करंट अफेयर का पार्ट को आपको लिंक करना है, तो इन दैट केस ज्योग्राफी इज वन मैगजीन, योजना, कुरुक्षेत्र. ठीक है. सो ज्योग्राफी एंड यू इज मींस यू कैन बाय दिस मैगजीन, ओके, एवरी मंथ. ओके, is this magazine include your all the important current affair related issues related with the geography, like extreme weather event. When we talk about extreme weather event, that include your cyclone, thunderstorms, okay, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में, और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे क्या हो रहा है, सॉइल्स पे क्या हो रहा है, माइग्रेशन किस तरह से लोगों का हो रहा है दैट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स. तो वो सारे इश्यूज जो करंट अफेयर रिलेटेड है, पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, दे वेरी वेल कवर इन दिस मैगजीन ज्योग्राफी एंड यू. And Yojana and Kurukshetra is entirely help you in your optional paper 2, that is Indian geography, where a problem related with your agriculture issues, okay, rural development programs, that will help you to write a good answer, because when a question will become on the topic called contemporary issues, in proper burning understanding of the topics related with the agriculture issues, okay, environmental problem in India, okay, so that will be covered by these two magazines, Yojana and Kurukshetra.
Apart from this, a newspaper every day. I am mentioning here Indian Express. The Hindu is also very good, but Indian Express, what is the importance thing about Indian Express is that include some of the pages related with the rural India, entire problems or issues or what are the challenges in rural India. They cover very well, and part of the explanation, that page of the Indian Express, that include very detailed study of each and every issue, and also suggest some of the recommendation. They give some recommendations how we can improve such problems. That's why Indian Express news will be helpful for you apart from the Hindu newspaper. Okay, now before going to start your optional subject, first important thing कि आप पहले ये बेसिक रीडिंग, ये जो बुक्स हैं इसको पहले आप पढ़ो, तो उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है कि ओल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी, ओल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी यू कैन बाय फ्रॉम एनी ऑफ द मार्केट और यू कैन डाउनलोड आल्सो फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट। तो उसमें आपको 6 to 10 क्लास के जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो आपको एक बार पढ़ना है। सी ओल्ड एनसीईआरटी में क्या है कि आप क्लास 8 का जब एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ये सारे कंट्री वाइज उसके ज्योग्राफी, उसके इकोनॉमी, उसका इंपॉर्टेंट क्रॉप्स क्या है, इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी क्या है, इकोनॉमिक जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें वो कंट्री वाइज दिया हुआ है। So you will understand the world geography more in a more better manner. Okay, you will able to learn which mountain is present in North America, which river is present in North America, South America. You will understand entire physiography of the world. So that's why I'm recommending here old geography NCERT from class 6 to 12, 6 to 10, and then new geography class 11 and 12 NCERT, new NCERT. So you can buy a new NCERT, you can download a new NCERT from a website of जो एनसीईआरटी का है, वहां पर क्लास 11 एंड 12 की एनसीईआरटी जो न्यू वाली है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद वेयर ओल्ड एनसीईआरटी अवेलेबल, no class 10 NCERT, yes, that required a economic activity, that will the part of your human geography, and that will be available online, or you can order of online from different shopkeepers in Delhi. They are also, they will deliver, they will do if you will order them, then they will provide you all these books. Okay, देन एक बुक आती है जीसी लोन की बुक आती है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आपको जीएस में भी पढ़ना है, तो एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप ज्योग्राफी एज ऑप्शनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंप्लीट दिस बेसिक रीडिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या आपका स्ट्रेटजी होगा ऑप्शनल को कैसे कवर करना। तो योर एंटायर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट इनटू 3 कैटेगरीज। पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज है that include your basic reading. So first you start to read NCERT, new class 11, 12 and GC Leong book. Suppose you want to join, you are planning to join a coaching institute for geography optional. So before going to join a coaching institute, you must complete your this basic book, basic materials, NCERT, okay, class 11, 12, GC Leong की बुक पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद आप सेकेंड स्टेज है दैट इंक्लूड योर टू ज्वाइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट है। सेकेंड स्टेज में आप क्या करें, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, क्लास नोट्स एंड बुक्स, आपको जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो नोट्स प्रोवाइड होता है उसको डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है, डेली आपको रिवीजन करना है। ठीक है, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक, एंड एट द सेम टाइम यू सी पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर, ओके, व्हाट एवर द पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑन अ गिवन टॉपिक। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि पास्ट ईयर किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे टॉपिक आपका कंप्लीट है, सपोज यू हैव डन विद अर्थ इंटीरियर, सो ट्राई टू सी पास्ट ईयर क्वेश्चन कि कैसा क्वेश्चन आया है अर्थ इंटीरियर के ऊपर, कि सिस्मोलॉजी के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी हैड आस्क्ड फ्रॉम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, फ्रॉम क्लाइमेटोलॉजी, हीट बजट अगर आप पढ़ चुके हैं तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पढ़ चुके हैं, तो ट्राई टू सी व्हाट क्वेश्चंस ऑलरेडी दे हैड ऑन गिवन टॉपिक। ठीक है, और थर्ड स्टेज जो आता है आपका टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सो ज्वाइन ऑप्शनल टेस्ट सीरीज इन थर्ड स्टेज, राइट एटलीस्ट 5 to 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक। ओके, 5 to 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब 5 to 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आता है, आप ये देखो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के जो है सैंपल, आप ये सैंपल देखो। ठीक है, ये पास्ट ईयर टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक्स है, प्लेट टेक्टोनिक 3 आपने पढ़ लिया है। नाउ यू सी द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। First question is discuss the concept of volcanicity and show how the theory of plate tectonics explain the mechanism of volcanism and volcanic eruption. ये 1998 में ऑप्शनल में पूछा गया था क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, 2000 में फिर प्लेट टेक्टोनिक्स से क्वेश्चन आता है विद रेफरेंस टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है,
तो यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या है। एंड दिस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इन 1960 when this became this is the most acceptable theory that explain the reason behind for origin of mountains. Okay, mountain building process क्या है, volcanicity क्या होता है, earthquake क्या होता है, all the geophysical phenomena that is happening over the earth surface, that everything are understand by the help of plate tectonic theories. उसमें यंग फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन का ओरिजिन क्या होता है उसके बारे में बताता है। फिर 2014 में क्वेश्चन आता है स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, हाउ डज इट हेल्प इन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड एप्लाशियन माउंटेन्स। सी सेम क्वेश्चन अगर आप इसको सॉल्व चुका है तो दे कैन इजीली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और सबसे रिसेंट लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ प्लेट बाउंड्रीज के बारे में आपको पूछा गया था, व्हाट आर different types of plate boundaries. So if you know the concept of plate tectonics, obviously you will know what are the different types of plate boundaries, what are different types of plate interactions that cause for the origin of volcanic or earthquake and fold mountains of the world, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ोगे तो सबसे पहले तो प्लेट के बारे में आप देखोगे, दिस इज द डायग्राम एक्सप्लेन अबाउट द प्लेट, दिस इंक्लूड योर बोथ मेजर प्लेट एंड माइनर प्लेट। So major plate, total number 7 major plates, North American plate, Pacific plates, okay, South American plate, African plate, Indo-Australian plate, Eurasian plate, these are the continental plate and oceanic plate, ठीक है। तो ऐसे भी प्लेट्स हैं जो कि ओशनिक भी हैं और कॉन्टिनेंटल भी हैं, और कुछ प्लेट ऐसे हैं जो कि प्योरली ओशनिक प्लेट हैं। सो क्वेश्चन व्हेन इज कम की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था तो उसमें देखिए सबसे पहला आता है डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री। सो एज यू सी इन डायग्राम के डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री में क्या हो रहा है कि टू प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ओके, दिस टू प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दिस कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशनिक क्रस्ट, न्यू ओशनिक क्रस्ट। प्लेट बाउंड्री basically divergent plate boundary क्या होता है कि when two plates are moving away from each other, that that type of plate boundary is called a divergent plate boundary, and this is the reason for the formation of mid oceanic ridges on ocean floor, ठीक है। तो आप इस पे क्या क्या डिफरेंस लिख सकते थे, अगर इफ यू वांट टू कंपेयर a divergent plate boundary with the convergent plate boundary, then you write most of the divergent plate boundary you will see over the ocean floor पे होता है, oceanic crust पे होता है जहां पर न्यू crust का फॉर्मेशन होता है, मिड ओशनिक ridge का फॉर्मेशन होता है, that is called divergent plate boundary, okay। Next type of boundary is called convergent plate boundary. See, this is the convergent plate boundary when two plates are moving towards each other। क्या हो रहा है कि दो plates जो हैं they are colliding together, so that is called convergent boundary। So this type of boundary result in the formation of fold mountains. When we talk about the mountain of North America, like Rockies Mountain, Andes in South America, Himalaya in Asia, so how this Indian plate is colliding with this Asian plate, and that result in the formation of mountains, fold mountain means Himalaya mountain in Asia। So ये डायग्राम आप देखोगे, एनिमेटेड डायग्राम है, इंडिया, हिमालय एंड तिब्बतन प्लेटो का कैसे फॉर्मेशन होता है, इंडियन प्लेट एंड एशियन प्लेट बोथ आर कोलाइडिंग टुगेदर, सच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज कॉल्ड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एक तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए पहला वाला जो प्लेट बाउंड्री था डाइवर्जेंट, इसको कहते हैं हम लोग की कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, मींस यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्ट होता है, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। दूसरे को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, मींस यहाँ पर क्रस्ट का डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये सबडक्शन हो रहा है। You see one plate subducting under the other plate, and that subduction plate when reaches at the depth of 100 kilometer, it cause for, because temperature is very high, it means temperature melting point उसका बढ़ जाता है, and that molten state होने के बाद volcanic eruption होता है। So it's called destruction, destroy हो रहा प्लेट का। और जो थर्ड वाला होता है ट्रांसफर प्लेट है, two plates like another, there is no construction no destruction, ओके, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट, एक कंजर्वेटिव, जहां पर हो रहा है प्लेट मतलब कोई ना और कोई कुछ नहीं रहा यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। सिंपल, तो लास्ट ईयर 2019 था, यू हैव टू ड्रॉ, इसका आंसर लिखने के लिए आपको डायग्राम बनाना होगा। यू शुड राइट द एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यू कैन राइट अ रिसेंट एग्जांपल ऑफ अफ्रीकन, जैसे कि रेड सी का फॉर्मेशन हो रहा है, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट आर एग्जांपल फॉर
कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस हो रहा है, वहां पर एक रेड सी इज ओपनिंग सी हो रहा है, ओपनिंग ओशन हो रहा है. And then you write about the convergent plate boundary. Example, you can include mountains formation of Andes, Rockies, Pacific plate collide with your American plate, result in the formation of Andes mountain and this mountain, Rockies mountain. Similarly, Asian plate like Indian plate is colliding with Asian plate, result in the formation of Alps mountain, so Himalaya mountain. Okay, so ये आपको example के साथ देना था यहाँ पर. Now, when we talk about the question paper format की जब बात करते हैं तो ये इस तरह का यूपीएससी मेंस में आपको क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ 8 क्वेश्चंस दिए रहेंगे. यू हैव टू राइट ओनली 5 क्वेश्चंस. आउट ऑफ द 8 you have to write 5 questions. See, this green color indicate that this question is compulsory for everyone. So question number 1 that include your 5 question, 5 sub question, that will be each and every question will be for you. You have to attempt. आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है. क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए कंपलसरी है. एवरीवन हु अपीयर इन ज्योग्राफी ऑप्शनल उनको लिखना है. आपके लिए चॉइस क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 7, 8. आउट ऑफ 6 क्वेश्चन नाउ यू कैन सेलेक्ट ओनली 3 क्वेश्चन. आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है. सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सिलेक्ट किया और क्वेश्चन नंबर 6 को सिलेक्ट किया और क्वेश्चन नंबर 7 को सिलेक्ट किया. You have to write all the answer. This depend on you because ये 50-50 100 मार्क्स का हो गया और 3 क्वेश्चंस अगर सिलेक्ट करते हो तो 50 मार्क्स, तो टोटल 250 मार्क्स हो जाएगा. तो आपके 3 क्वेश्चंस जो बनेंगे, आप जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट किए और उसमें आपने बी आपको आता नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप 3 का बी लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं. अगर आपने सिलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर 2, 4 and 5, then you have to write answer whatever the questions. Okay, so what we'll do, you just select 3 questions, just select 3 questions, 2, 3, 4. Then you have to write answer from only these 3 questions. ऐसा नहीं कि आपने 2, 3 को अटेम्प्ट करके आप फिर से आप चाहोगे कि 6 का एक क्वेश्चन लिखें तो वो ऑप्शन नहीं है आपके, उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. विल नॉट गेट अ सिंगल मार्क्स फॉर दैट. So total number of 5 question you have to write. Now my voice is audible. Okay, the format of question paper. This is the format of question paper. Those who want to join optional sub class, you can join tomorrow. Tomorrow we have a class. Okay, so for class timing will be from 2 to 5. You can ask me a question. If you have any doubt, you can ask me a question. Detail of optional class, and contact to Career Launcher. Okay, I am repeating again the question format. See, I am repeating again the question format. See, this is the question format. We have to write the answer of 5 questions. So out of this, number 1 and 5 is compulsory for everyone. Question number 1 include your 5 questions. Okay, that 5 question you have to answer all the 5 questions. If you know very well, then if you know only 2 answer, question of 2 answer, then you can write answer of 2 question.
Then question number 1 and 5 will be compulsory for everyone. Now you have a choice. You have a choice like question number 2, 3, and 4. 2, 3, 4, and 6, 7. So out of the total number of 6 questions, you have to select. Let me. Okay. You have to select 3 questions. Suppose you have select 2, 3, and 4. Okay. Then you have to write answer of out of the following 3 questions. No need to. Okay. Yes. What your question? Kindly confirm the fee. So that we will go ask to please contact Career Launcher. I will just visit you, or Himanshu sir is the main person who will give you all the details regarding admission, everything. So I hope you all understood today's session in a very well manner. We'll have a session again. That session will be inform you. Okay. Let me. I'm writing the my person who will give in all idea, all information. Kindly contact. We will give you detailed information about the our course, when you have to join, how much fee is there, everything. Okay. Thank you to everyone. Good night.